आ रहा है। चटनी बना ले लिया। Hello, all of you. Good evening. Good evening, ma'am. Good evening, all of you. Should we start now? 21 are already there. Yes, ma'am. Okay. And all of you, please, I'm reminding you, all of you again, that once you join, very soon you write your name and enrollment number as your attendance, right? So that you don't forget to give your attendance in the end. So I think now it's the right time to start because 21, 22 people are already there. So basically, this block is very practical thing. Uh, Discussing about software, DSpace and GSTL. Okay, and before we discuss about these two softwares, we will just go through the certain topics which we have already covered in our previous classes. For example, digital library. What is digital library? How many types of digital library are there? Types actually we have not discussed, but digital library as such, the term we are already aware. Anyways, I start with the term digital library is a shift, as we did discuss this thing already in yesterday's class, if you remember, right? The term digital library is a shift from the earlier term electronic library, which was used for the last 2 decades to describe the bookless library, which relies on telecommunication and computers to provide users with whatever information they need, right? In the early stages, actually when libraries started using computers for the sake of doing their manual traditional exercises, the basic exercises of acquisition, serial management, circulation, user management. We were in the very beginning, digital library word was not there. It was we used to call as electronic library. Then later on, electronic library term was switched, and we started calling as digital library. In the early stages of development of digital libraries, the main focus was on providing dial-up access to online public access catalogs, OPAC. OPAC is online public access catalog. Public access catalog means that whosoever community user is coming to your library, they will be using that online access, online catalog. Previously, in traditional libraries, we were using catalog cards, and then later on, OPAC was used. The term, however, evokes different meaning for different people. To some, it may simply mean computerization or to the traditional library system. To those with library science background, it means things in a new way, using new type of information resources, new approach to acquisition, new methods of storage and preservation, new approaches to classification and cataloging, new ways of interaction with patterns, with more reliance on electronic system and networks. Then integrated digital services we already discussed yesterday, that actually creates a shared environment linking everything from personal collection,
collection of conventional libraries and large databases is spread all over the world. Because if we are using integrated library software in our library, then we can very easily get connected to the other library, not only situated anywhere matlab, in the city, not in the country, but we can connect to any library situated anywhere in the whole world. And in the recent years, the term virtual library, which we discussed yesterday, and we also discussed what is the difference between digital library and virtual library. So this word is becoming more popular. It is being used to describe libraries that provide access to digital information using variety of networks, especially the network and the World Wide Web, irrespective of place and time. According to Gilbert, he gave the definition: it is an aggregate of libraries or literature bases, the catalog or bibliographies of which are accessible electronically. Example, with a personal computer, and of which some may offer document ordering and delivery services. The center of a virtual library is by definition the individual user. As you are sitting at your home, in your home, on your desktop, that is the whole library or his or her workstation. So virtual library, as we discussed yesterday, that we don't know from where we are retrieving the information. So actually that is the virtual library. Thus, in the present day context, virtual library is the convergence of a number of concepts like electronic browsers. Like browser means what are the browser? We are using Google Chrome, we are using Mozilla Firefox, we are using Internet Explorer. So these browsers are these whatever browsers on the available on the internet and we are using, they all are an example of virtual library, online catalogs, and literature bases and empowerment of the end users. So here is again something is written about the concept of digital libraries, that in comparison to traditional libraries, digital libraries provide efficient and qualitative services by collecting, organizing, storing, disseminating, retrieving, and preserving the information. Digital libraries support preservation, besides making information retrieval and delivery more comfortable. Because, as compared to the print collection, which was supposed to be the main function of the traditional libraries, in comparison to that, digital library is focused on preservation. Preservation means because no doubt, digital information is more durable than the print information. That is why here it is written that digital libraries support preservation. And not only that, that information retrieval is also very smooth. You can get the information on your desktop. It provides online access to historical and cultural documents whose existence is endangered due to physical decay. Means your library can keep the record of the of the very old documents or very old historical articles of your institute, like BHUs and the institutes which are very old institutions, which have a vast collection of their in their library. They can digitize and keep them and
provide them for reference to their researchers in present day. The major areas which offer digital libraries great exploitation are information retrieval, multimedia database, data mining, data warehouses, online information repositories, image processing, hypertext, World Wide Web, and wide area information services. WAIS, Wide Area Information Services. So, you can say that digital libraries today make good use of what we know about searching. Large collections and techniques such as machine assisted indexing are employed increasingly often as we strive extend our reach to progressively larger collections. But we are on the verge of a new era, one in which machines will learn from what we do and then apply those capabilities to enable the management of digital content at a far larger scale than we could ever hope to do ourselves. Therefore, the advantages of digital libraries, according to Hadouti, are user can access the information anywhere, reduces bureaucracy by providing access to the information. The information is not necessarily located in same place. Understanding the catalog structure is not necessary. Means for user, he it is not mandatory that he should know what is the catalog or whatever is the technical processing have been done behind that particular information or document. Without knowing all that things, you will get the information. Cross references to other documents speed up the work of users. Means cross reference matlab you might be you might have faced this thing also कि Google पे search करते वक्त suppose uh, you type information short note on D space या short note on digital library, okay, so you will get so many links on Google. And it might be possible that if you are looking for one particular specific information, but you will get related topics or interdisciplinary topics on the internet, right? So this is called cross reference. So it is not or cross reference, suppose when you visit any library, okay, and you visit to a particular section to find your book of interest, and suppose आप तुलसीदास को देखने गए, तुलसीदास की रचनाएं देख रहे हैं, राइट? अब तुलसीदास की रचनाएं देखते देखते हो सकता है आप उससे रिलेटेड दूसरी बुक्स भी देख सकते हैं, तो उसको कहते हैं क्रॉस रेफरेंस। फुल टेक्स्ट सर्च, फुल टेक्स्ट सर्च इजी है डिजिटल लाइब्रेरी के कंसर्न में। प्रोटेक्टेड इंफॉर्मेशन सोर्स, वाइड protected information source means ki even though you are so many users are using that information from that resource, but that particular source is still protected. Wide exploration and exploitation of the information, that information is used at a very large level by many number of users. The knowledge dissemination is an integral part of success story of popularity of creating digital libraries. So basic basic idea behind digital library is that more and more users, that information should reach to more and more users, it should be utilized. The aim is to provide universal access to human knowledge, and given the advancement of digital storage and communications,
This goal is now very much achievable. There are the few models for digital library. Distributed model, as the name itself suggests, with the incorporation of open models and distributed technologies. As we discussed yes in yesterday's class, that so many open software sources are available on internet. So this also increased and this motivated actually the librarians to digitize their libraries. So in this model, with the incorporation of open models and distributed technologies, the libraries have the potential to get more involved in knowledge creation, dissemination, and use. So librarians are more involved now in creating the knowledge and disseminating it to various concerned users. In reference to libraries, the creation and dissemination of knowledge, it means that represents the library's contributions more broadly and that intertwine the library with other stakeholders in the activities. Then the second one is open paradigms and models. There is a new trend emerging as open source movement. The concept of collaborative software development with developers sharing the source code reflects a fundamental shift away from proprietary software and systems. As we discussed yesterday, that open source softwares are also available in the market, and commercial softwares which we are supposed to buy if we will go for it. So but these open models are appearing in new applications areas such as the open knowledge initiative to share learning technologies. In this second phase in the evolution of library roles, the library starts to engage in collaboration as a strategy to address its core mission of building collections, maintaining access, and providing service. Then, one more thing is you need to understand the difference between digital collections versus digital library. ऐसा नहीं है कि आपने डिजिटाइज कर दिया and you'll say that now we have a digital library. तो डिजिटल कलेक्शन खाली रख लेना अपने पास is not you cannot call it as digital library in that way. So although there is no clear definition about what exactly constitutes a digital library, digital collection are raw content, while digital libraries are the systems that make digital collections come alive, make it usefully accessible, useful for accomplishing work, and connect them with communities. मतलब सपोज रॉ कंटेंट मतलब जिसका कोई यूज नहीं है आपके पास, मान लीजिए आपके पास इंफॉर्मेशन है, आपकी खुद की जो इंफॉर्मेशन है, आपका नाम हो गया, आपका डेट ऑफ बर्थ हो गया, आपने 10th कब किया, आपने 12th कब किया, ये दिस इज ऑल क्या है, डेटा है ना। ये डेटा को आपने चलो आपने अपनी मार्कशीट को हार्ड कॉपी से उसको डिजिटाइज स्कैन करके रख लिया, ठीक है। इसी तरह से मान लो आपने अपने सब फ्रेंड्स का कर लिया, बट अनलेस एंड अनटिल, या आपने स्टूडेंट्स का कर लिया, बट वो तो रॉ डेटा ही कहलाएगा ना, अनलेस एंड अनटिल दैट डेटा इज बीइंग यूज्ड बाय समवन। तो वही यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है कि अनलेस डिजिटल कलेक्शन तो रॉ कंटेंट है, अनलेस एंड अनटिल इट इज यूज्ड बाय, तो कलेक्शंस gain value only when these are surrounded by a matrix of content and interpretation that makes them useful. Therefore, it should be
ascertain that we develop digital libraries, not just digital collections. ठीक? Three general characteristics of the digital library of the future are a comprehensive collection of resources important for scholarship, teaching, and learning. Nowadays, what is happening in academic institutions like IITs, IIMs, ISers, and maybe or may not be, you are not aware. If you are, have you ever heard about DigiLocker? Uh, has someone Yes, ma'am. DigiLocker? What is that? Ma'am, in that all IGNOU and such kind of universities issues a mark sheet in DigiLocker. Okay, Ma'am, acha, you are in getting. DigiLocker, we save our valuable documents like mark sheet and Aadhaar card and all, PAN card, etc. Right, We right, save that. right. Good. So DigiLocker actually for documents and your transcript purpose, DigiLocker is the plain platform, ठीक है? Then DigiLocker NAD, वो जो platform है which you are talking about, that on which you get your documents and certificates and mark sheets, वो DigiLocker NAD कहलाता है, ठीक है? तो उसका पर्पस क्या है? डिजिलॉकर नैड क्यों बनाया गया है? व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड दैट? कि यू योर ऑल सर्टिफिकेट्स आर kept safe, and you need not to carry all your documents, all your certificates, all your mark sheets, hard copy जो आपको लेके जानी पड़ती है कहीं पे भी, if you are going for applying for higher education, or if you are going to apply for for any job purpose. So, Yes, in ma'am. that case, you need not to carry your hard copies, and your documents also can be verified by logging into your DigiLocker NAD account. And why I just mentioned this thing, DigiLocker thing, and Shodh Ganga is also there, right? Shodh Ganga, do you know? Shodh Ganga, have you heard? Yes, Yes, What ma'am. is So ma'am. media Yes, is ma'am. available for the researcher and scholars to get the Inflibnet. information Inflibnet. in real time. हाँ, शोध गंगा तो इनफ्लिबनेट के प्लेटफॉर्म पे है। क्या पर्पस है शोध गंगा पे? क्या मिलता है आपको? मैम, इंफॉर्मेशन मिलता है रिसर्च स्कॉलर्स को। अगर कुछ अपना रिसर्च पर्पस के लिए ढूंढना है तो कुछ हाँ भी हाँ, मिल तो सकता है व्हाट And अवेलेबल। दैट सारे डॉक्यूमेंट कॉल्ड? PhD thesis वहीं पे Thesis. सबमिट होते हैं. Yes, yes, that is the main term. You get thesis on various topics uploaded by various universities of the country on Shodh Ganga. So, what is the purpose behind this storing and uploading these theses? So, the main purpose is that first of all, duplicacy नहीं होना चाहिए टॉपिक का, or you get your the information related to your research on this Shodh Ganga, right? So and you know that NIRF आपने सुना होगा, NIRF ranking, right? Yes, ma'am. So this NIRF ranking of the institutes, जो universities को NIRF ranking मिलता है ना, rank 1 2 rank जो आता है हर साल, तो that has been connected, and these portals are from Ministry of Education, right? And they have made it mandatory for all the academic institutions, universities and colleges and organizations to upload their thesis on Shodh Ganga, PhD thesis on Shodh Ganga. Why? Because this NIRF ranking has been linked with Shodh Ganga. They used to pick the data of PhD student of any academic institutions from Shodh Ganga. It means that if institution is not participating in this Shodh Ganga portal, then your ranking will be affected, because the number of PhD students will not be reflected on this portal, and
you will lag behind in the this ranking race, right? So that is why in this slide it is written na, the general characteristics of the digital library of the future, future क्या present में ही चल रहा है, a comprehensive collection of resources important for scholarship, teaching and learning. So these portals have been made mandatory for the academic institutions so that they can get the advantage for scholarship purpose for their students, for teaching and learning purpose, and then readily accessible to all types of users, irrespective of their any category, right? Managed and maintained by professionals, these digital library. देन टाइप्स का एज सच क्या है कि किसने डेवलप किया, दैट इज द ओनली कैटेगरी ऑफ द डिजिटल libraries. Digital libraries can be grouped in different ways. They can be classified by origin, such as digital libraries developed in the USA as a part of, means some projects are they began in different countries and still they are going on. So basically digital library type depend on the origin where it originated. यूएसए पार्ट ऑफ DLI-1 DLI-2, मतलब DLI ये डिजिटल लाइब्रेरी इनिशिएटिव, digital library initiative projects are going on in almost all the countries of the world. Digital libraries developed in the course of the ELIB electronic libraries program in the UK. Digital libraries built by individual institutions, digital libraries that are part of national libraries, digital libraries that are part of universities, or by period, by country of origin, and so on. So these are early digital libraries example, these are the examples of Gutenberg digital libraries of institutional publications के ACM है, IEL है. तो these are the various types of digital libraries developed by different universities, institutions, organizations. Digital libraries of special material, digital libraries as research projects like GDL, digital libraries are hybrid library projects. So there, and here are some digital library initiatives or type are the more or less same thing. Like British Libraries digital libraries program. So if you will click on this link you will get, you will land on the website page of this British Library of Congress digital library. ये आपने, I don't know whether you all have seen Library of Congress. Suppose I type Library of Congress website, ठीक है? तो ये आपका होम पेज आ गया लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस का. अब यहाँ पे आप देखेंगे ये इनका जो होम पेज है चेंज भी होते रहते हैं, एडिट करते रहते हैं लोग. ये कैटलॉग पेज है. अगर हम चाहें तो आई कैन चेक कि what is the collection, या if any topic of I am searching for, I can see that topic, right? So this is basically the idea behind this गूगल डिजिटल. अगर हमारे इंडिया का जो लाइब्रेरी है वो डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया जो है इज द ग्रेटेस्ट डिजिटल लाइब्रेरी इनिशिएटिव इन द country. DLI is a part of Universal Digital Library and Million Books project coordinated by the Carnegie Mellon University, USA. अगर हम इसमें टाइप करते हैं कि डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, ये प्रोजेक्ट किसके अंडर है? कैन एनीवन टेल मी?
डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, ये प्रोजेक्ट किसके अंडर, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी? ये आईआईटी है ना मैम? हम्म। आईआईटी मद्रास कर रहा था, आईआईटी मद्रास। आईएससी बैंगलोर, हम्म। आईएससी बैंगलोर है आईआईटी ना? मद्रास, नहीं, आईआईटी मद्रास कर रहा था। नहीं, आईआईटी रुड़की। ओह, ठीक है, ये देखो होम पेज दिख रहा है ना आप लोग को? हाँ लेकिन मैम इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ये सारे पुराने मटेरियल डाल के रखा, मैंने ये पूरा चेक कर लिया है। ठीक है, वो अपडेट्स में रहता है प्रॉब्लम। वो ऑलमोस्ट, हालांकि लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस मोस्ट अपडेटेड वेबसाइट है। तो ये आई जस्ट वांटेड टू शो यू कि दीज आर ऑल डिजिटल लाइब्रेरी इनिशिएटिव्स। एंड ऐसा नहीं है कि हमारे इंडिया में नहीं है, हमारे इंडिया में भी डिजिटल लाइब्रेरी इनिशिएटिव बहुत अच्छे से किया जा रहा है बाय आईआईटी रुड़की। ठीक है, एंड व्हाट कैन बी द फ्यूचर ट्रेंड्स? फ्यूचर ट्रेंड्स में पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, जो हम अपने लेवल पे करते ही हैं, इंस्टीट्यूशन लेवल पे। हाँ, long term relationships between humans and information collection systems means this is related to personal information management, but also considers evolutionary characteristics of behavior systems that run personalization, system to system migration across generation of technologies, and similar question. This is connected to human computer interface studies, and also to studies of how individuals and groups seek, discovers, use, and share information, but goes beyond the typical concerns of both, to take a very long time horizon perspective. Role of digital libraries, digital collections, and other information services in supporting teaching, learning. Basic purpose इसका teaching, learning और research को support करने का है, and human development. The analysis here needs to be done not on a relatively transactional basis, but how information resources and services can be partners over development and learning that spans an entire human lifetime from early childhood to old age. Active environments for computer supported collaborative work offer the starting point for another research program. These environments are called for under the term collaboratories by the various cyber infrastructure and e-science programs, but have much more general applicability for collaboration and social interactions. From one perspective, these environments are natural extension of digital library environments. But at least some sectors of the digital library community have always found active work environments to be an uncomfortable fit with the rather passive tradition of libraries. Perhaps here the baggage of digital libraries as a disciplinary framework is less than हेल्पफुल. समटाइम्स इट हैपेंस दैट जो हमारा पुराना स्टाफ रहता है, और मतलब ये अब तो नहीं होता है ऐसा, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल दे आर गेटिंग एटलीस्ट बेसिक कंप्यूटर इंफॉर्मेशन. बट प्रीवियसली व्हेन कंप्यूटर्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन लाइब्रेरीज, तो जहाँ पे सीनियर स्टाफ रहता था, तो दे वर वेरी hesitant in using and switching on to any new technology. वो ह्यूमन नेचर है थोड़ा सा इनिशियली, सबको एक हेजिडेंट फीलिंग रहता है कि अरे पता नहीं कैसा रहेगा, क्या रहेगा. तो दोज वर द थिंग्स. But nowadays the situation is not like that, and the young professionals, they are very warm heartedly welcoming the new technologies in the library. And even the role of the librarians have changed a lot because of the introduction of that so much technology in library, that librarians are supposed to have and change their role. That is now the nowadays the role is not of the traditional librarian just sitting inside the library in his cabin
and just passing his whole day. But because of the introduction of so much digital technologies in the library, the librarians and the staff, they are interacting with the users, they are getting information about the interest of their users. So the nowadays, although users are coming to the library, but because of the advancement of technologies being used in the library, now the library is reaching to the user. User need not to come to the library, and even he or she is sitting at home, he she can access the resources, whatever being subscribed in the library, or anytime he or she can, the user can ask question to the librarian about any research topic or any topic of his interest. He can very well ask. So these are the positive of positive things, characteristics, features you can see about the digital library. Then digitization process मीन्स कि जब आपने डिसाइड किया कि नाउ यू हैव टू डिजिटाइज योर ट्रेडिशनल लाइब्रेरी. डिजिटाइज योर ट्रेडिशनल लाइब्रेरी मीन्स कि आपको लाइब्रेरी में जो भी बुक्स हैं, जर्नल्स हैं, सीडीज हैं, डीवीडीज हैं, या वॉट एवर इज द collection of your library, you decide that you have to digitize. Then how to proceed about that? A digital library may contain materials that are born digital, such as e-journals, e-books. E जहाँ पे भी लगा है, e means electronic, electronic journals, electronic books. मतलब हो सकता है आपकी लाइब्रेरी में प्रिंट कलेक्शन भी हो और इलेक्ट्रॉनिक कलेक्शन भी हो, और may contain materials that were originally produced in another form but subsequently digitized. The process of digitizing materials involves different steps depending upon material, टेक्नोलॉजी एंड रिक्वायरमेंट. मतलब ये डिपेंड करता है कि क्या, कौन से टाइप का मटेरियल अवेलेबल है आपकी लाइब्रेरी में, और उसको किस तरह से हम डिजिटाइज करेंगे. मतलब कौन से टाइप का मटेरियल, मतलब वो क्या प्रिंट में है, या वो कोई पुराना वीडियो है, या कोई पुराना भाषण है आपके डायरेक्टर का या आपके वाइस चांसलर का, है ना. तो ऑडियो फाइल भी हो सकती है, वीडियो फाइल भी हो सकती है, टेक्स्ट फाइल भी हो सकती है. तो here comes the digitization of print based documents. In the case of print based material, it is the hard copy of the document which needs to be scanned and digitized. अब जो प्रिंट में है, जैसे नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, अपना मार्कशीट हमको सेव करना है या प्रिजर्व करना है, या डिग्री की कॉपी हमको बना के रखनी है, तो हम क्या करते हैं, कोई भी हार्ड कॉपी या प्रिंट फॉर्म में जो भी अवेलेबल डॉक्यूमेंट है आपके पास, आपका पर्सनल डॉक्यूमेंट है, एंड दैट यू वांट टू प्रिजर्व इट, तो हम क्या करते हैं, सिंपल उसको स्कैन कर लेते हैं. चाहे आज मोबाइल भी बहुत अच्छे हाईटेक मोबाइल्स आते हैं, आप चाहो तो प्रिंटर स्कैनर से स्कैन करिए या मोबाइल से स्कैन करिए. तो स्कैन कर लिया, उसको पीडीएफ फॉर्म में रख लिया, वो क्या हो गया, वो डिजिटाइज हो गया. उसको थोड़ा सा एडिट कर लेते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि कैसा क्या करना है ना. तो इतना ये आप लोग के लिए, आजकल के स्टूडेंट्स के लिए उतना डिफिकल्ट नहीं है टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ डिजिटाइजेशन, बिकॉज कि आप लोग ऑलरेडी यू आर बोर्न एंड ब्रॉट अप इन दिस डिजिटल एरा, है ना. मोबाइल के साथ में आजकल बेबीज आर बोर्न विद द मोबाइल इन हैंड. तो उनको, बल्कि वो हमको सिखाते हैं कि कैसे करना है, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ मोबाइल. मोबाइल आता नहीं है कि घर पे
बच्चों के हाथ में मोबाइल ज्यादा रहता है और पेरेंट्स के हाथ में कम रहता है। क्यों? क्योंकि उनको उतना बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो कुछ इनहेरिटेड रहता है ये जनरेशन के बच्चों को, कि आपको अपने आप ही समझ में आता जाता है। एंड ऑल्दो बिकॉज दीज टेक्नोलॉजीज आर ऑल्सो वेरी यूजर फ्रेंडली, तो सिंपल क्लिक में आपको पता चल जाता है कि सेटिंग आपको कैसे करनी है, या मोबाइल आप खरीद के लेके आते हैं घर पे तो आराम से आपको पता चल जाता है कि इसकी सेटिंग्स में जा करके आपको क्या, आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप उसको मैनेज कर पाते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को। तो हार्ड कॉपी कैन बी अ पेपर बेस्ड डॉक्यूमेंट, माइक्रोफॉर्म्स और प्रोजेक्शन स्लाइड्स, कुछ भी हो सकती है। फॉर ऑडियो वीडियो मटेरियल मीडिया, कन्वर्जन इज डन फ्रॉम एनालॉग फॉर्म टू डिजिटल फॉर्मेट्स। Capturing devices for print-based material include, but obviously that you require स्कैनर या डिजिटल कैमरा हमें चाहिए होगा। ये लाइब्रेरी के कंसर्न में हम बात कर रहे हैं कि लाइब्रेरी में हम कैसे करेंगे। तो स्कैनर होना चाहिए आपके पास या डिजिटल कैमरा होना चाहिए अटैच विद द कंप्यूटर। फॉर ऑडियो वीडियो मटेरियल, appropriate players like music system or VHS players attached with the computer will digitization process be required. The computer that you use must have appropriate audio video capture cards in it. अब डेटा कैसे कैप्चर कर सकते हैं हम? फॉर कन्वर्टिंग हार्ड कॉपीज इनटू मशीन रीडेबल फॉर्म देयर आर थ्री ऑप्शंस: कीइंग इन द टेक्स्ट, स्कैनिंग एंड कैप्चरिंग देम एज इमेज फाइल, या ओसीआर द फाइल्स। ओसीआर शीट आप सभी अवेयर होंगे। ओसीआर शीट्स आपको कहीं भी आप एंट्रेंस एग्जाम देने जाते हैं या किसी भी तरह का, तो आपको ओसीआर शीट मिलती है। There are several types of scanning devices available in the market nowadays. Scanners come in three broad price ranges. Low cost flatbed scanner देखा ही होगा सबने, लो एंड शीट फीडर टाइप, हाई एंड प्रोफेशनल और बुक स्कैनर्स। जो बड़े स्कैनर्स होते हैं, जब हमको लार्ज नंबर में जब हमारा क्वांटिटी ज़्यादा होता है तो हमको मतलब हाई प्रोफाइल, हाई टेक्नोलॉजी, हाई कॉन्फ़िगरेशन का स्कैनर चाहिए होता है अपनी लाइब्रेरी में। तो हाई एंड प्रोफेशनल और बुक स्कैनर्स। Scanning machines are generally based on charge coupled device CCD technology in low end devices, contact image sensor technology। ये सब टर्म्स आप एक बार पढ़ लो, इसको कोई मगअप करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब भी आप अपना खुद का काम स्टार्ट करेंगे, whenever you are going to start your digitization in your library, this all everything info, every type of information is available on the internet. जब आपको जरूरत होगी, then you can retrieve all these information. But here, with the view of your examination, with the view of your course, आपको एक बार you have to go through all these terms. तो आपने स्कैन कर लिया, अब उसको डिजिटाइज करेंगे। द प्रोसेस ऑफ डिजिटाइजेशन इन्वॉल्व्स capturing the physical or analog object through devices like scanners, digital camera, recorder, etc., converting them into numerical values in bits and bytes, which enables them to be read electronically. Digitization of text, अब हम स्कैन करते हैं और जब भी हम स्कैन करते हैं, आप स्कैन करते हैं, तो हम ये नहीं ना सोचते हैं कि ये स्कैनिंग हुआ कैसे। तो दैट इज ऑल द टेक्नोलॉजी बिहाइंड दैट। हमें तो सामने वी आर ओनली कंसर्न विद द रिजल्ट इन फ्रंट ऑफ अवर स्क्रीन, but this is only the basic technology and terms which we are going through here. This is the technology behind whatever we are getting the result in during this process of digitization. OCR software converts image of text captured by a scanner into computer editable text, which a word processor can read. The software tries to match the image of each letter against the pattern it recognizes, making use of the stored knowledge about the shapes of the individual
characters. The OCR software has options for either storing the text and graphics in their original layout or converting them into ASCII or word processing format. OmniPage Pro or and ABBYY Find Reader are two commonly used OCR software. तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या याद करने की ज़रूरत है कि हाँ चलो भाई सपोज इन योर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन इट कैन बी आस्क्ड कि जस्ट नेम टू सॉफ्टवेयर्स used for OCR software. So these are the Omni Page Pro, ABBY Find Reader. ABBYY Find Reader. You just need to know the name of the software. After OCR, you can export the resulting text into a variety of word processing, page layout, and spreadsheet applications. It also provides the option to save it directly as a PDF file. Then, what if you want to digitize video files? Okay, so here you will just go through the various types of video files. Digital video refers to video being viewed or manipulated in the digital system, or sometimes simply video stored in a digital tape format. The video may have originally been analog source material digitized into a computer, or it may have been stored directly to a digital tape format. Traditionally, digital tape formats were only available at the professional level, D1, digital, Betacam, etc. But now that some digital tape formats, that is DV, have emerged on the consumer scene, there is even more confusion about the generic term digital video. DG means digital video, and related DVCAM and DVCPRO is a digital tape format developed by a consortium of 10 companies. कंसोर्शियम का मतलब होता है ग्रुप में जब मिलकर कोई काम किया जाता है तो उस ग्रुप कह सकते हैं. ग्रुप का एक देयर इज अनदर टर्म नोन एज कंसोर्शियम. ठीक, कंसोर्शियम ऑफ 10 कंपनीज as a consumer digital video format. There are now over 60 companies in the DVC consortium, including Sony, Panasonic. ये सब नाम से तो you are very well aware, and some other similar names you have heard before. तो वीडियो कैप्चर करते हैं पहले हम. वीडियो कैप्चरिंग इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, सिस्टम रिक्वायरमेंट ये यहाँ पे लिस्ट है कि क्या क्या हमारी सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है फॉर ए बिगनर मल्टीमीडिया प्रोसेसिंग सिस्टम. तो ये कुछ सिस्टम रिक्वायरमेंट्स दी हुई हैं. ये आपको आपके मटेरियल में भी मिलेगा. ये दिस यू आर गोइंग टू गेट ऑन द इंटरनेट ऑल्सो, और लेटेस्ट मिलेगा, राइट. चूजिंग द राइट डिवाइस टू कैप्चर द वीडियो और ऑडियो. तो ये तो आपने भी देखा है कि भाई फोटो क्वालिटी या वीडियो क्वालिटी किस पे आपके घर में मोबाइल मान लीजिए दो चार मोबाइल होंगे तो यू कैन वेरी वेल एनालाइज दैट कि किस मोबाइल में हमारा वीडियो ज्यादा अच्छा आ रहा है. तो ये एक स्टेप है कि आपको यू हैव टू चूज right device to capture the video and audio. One can purchase a video card with video in support built right onto the card. We require the device which has a built-in analog to digital conversion. हमें ऐसा वीडियो कार्ड खरीदना चाहिए जिसमें एक ऐसा डिवाइस लेना चाहिए जिसमें एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन का इनबिल्ट feature दिया हो. This feature is quite useful since it allow us to attach any analog device जैसे कि VCR to our handycam and then stream the digital data over firewire to our computer. ये प्रोसेस है फॉर वीडियो डिजिटाइजेशन प्रोसेस है. एंड हियर आर द लिस्ट ऑफ सम सॉफ्टवेयर्स विच आर यूज्ड फॉर वीडियो डिजिटाइजेशन, जैसे कि वीडियो लैन है, वर्चुअल डब है, FFmpeg है, एडोब फ्लैश मीडिया एनकोडर है ना.
ये ज़्यादा यूज़ होता है. सॉफ्टवेयर डिजाइन टू एनेबल अस टू कैप्चर लाइव ऑडियो एंड वीडियो while streaming it in real time to रेड 5 एक ओपन सोर्स है, और फ्लैश मीडिया सर्वर सॉफ्टवेयर है, और फ्लैश वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विस. फ्लैश, ये स्ट्रीमिंग का क्या मतलब है? जैसे हम लोग आजकल आजकल क्या, वो तो काफी टाइम से लाइव स्ट्रीमिंग चलती है. जब लाइव शोज आते हैं टीवी पे, हम देखते हैं कॉर्नर में लिख के आता है लाइव. हाँ, तो लाइव का मतलब क्या है? मैच हम लाइव देख रहे हैं, मतलब वहां हो रहा है और हम अपने घर पे बैठ के देख रहे हैं. दैट इज कॉल्ड live streaming. So when high quality streaming along with a very low bandwidth is our priority, then this flash media live encoder 3 can help you broadcast live events and around the clock broadcasting, such as sporting events है, concerts हैं, webcasts हैं, news है, educational events हैं. न्यूज़ तो लाइव आती ही है. Then audio digitization. Audio digitization, analog audio tapes are available in two formats. जैसे मान लीजिए हमारे लाइब्रेरी में पुराने कैसेट्स पड़े हैं, है ना, ऑडियो टेप्स पड़े हैं, तो ये ओपन रील्स एंड कैसेट्स, they are available in various playing speeds and recording formats such as, ये इनका रिकॉर्डिंग फॉर्मेट होता है मोनोऑरल, स्टीरियोफोनिक एंड क्वाड्राफोनिक with tracking configurations like 2 track or 4 track. To digitize analog audio data, a player needs to be attached with a computer system through audio capture card. वो हम उसमें अटैच कर देंगे. दिस प्रोसेस ऑफ एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन ऑफ ऑडियो डेटा इज नोन एज सैम्पलिंग. The process involves sampling the original sound many times per second, and the frequency of this sample is measured in hertz, and the range of each sample is measured in bits. When digitizing sound, the frequency range in kilohertz determines the sampling rate, and the dynamic range, that is the ratio between lowest and highest sound, determines the number of bits per sample. देन ऑडियो कैप्चर के लिए कुछ वॉइस रिकॉर्डर्स होते हैं बेटर क्वालिटी के. कौन से हम यूज कर सकते हैं? जैसे कि ये लेम ऑडियो एनकोडर है. लेम इज ए हाई क्वालिटी एमपीजी ऑडियो लेयर 3 MP3 एनकोडर licensed under the LGPL. Currently, LAME is considered the best MP3 encoder at mid-high bit rates and at VBR. क्या पता आप गूगल में अगर टाइप करके देखें कि बेस्ट एनकोडर, ऑडियो एनकोडर कौन क्या है, तो नेम ऑफ द बेस्ट एनकोडर तो लेम का आता है, या पॉसिबिलिटी है कि किसी और का आ जाए. ये आपके स्टडी मटेरियल में ये इसको ही दिया गया है. VLC मीडिया प्लेयर, as already seen in the video processing, the video LAN can be also used for audio processing as well. VLC मीडिया प्लेयर को हम ऑडियो प्रोसेसिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं. अब उसके बाद कंप्रेस करना होता है. कंप्रेशन का भी काम हमें करना होता है. सपोज या जैसे हम कोई PDF फाइल में भी मोस्टली इट हैपेंस कि अगर या वीडियो फाइल है या MP3 फाइल है या MP4 फाइल है, तो हमने देखा होगा अगर हम मान लो अपने किसी फ्रेंड को अपना कोई वीडियो भेजना चाहते हैं, बट उस वीडियो का साइज बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, तो वो व्हाट्सएप में एक साथ नहीं जा पाता है. वी कैन नॉट सेंड इट इन वन गो, तो उसको हमें ब्रेक करके भेजना होता है. तो लेकिन उसमें क्या हम कर सकते हैं कि उसको कंप्रेस कर सकते हैं. कंप्रेस मीन्स उसका साइज डिक्रीज कर सकते हैं, उसी को कंप्रेशन बोलते हैं. तो ऑडियो कंप्रेशन एल्गोरिदम्स आर इम्प्लीमेंटेड इन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एज ऑडियो कोडेक. A codec is a device or program capable of performing encoding and decoding on a digital data stream or signal.
In addition to the direct applications, MP3 players or computers, digitally compressed audio streams are used in most video DVDs, digital television, streaming media on the internet, satellite and cable radio, and increasingly in terrestrial radio broadcast. Here are five MPG standards designed with a specific application and bit rate in mind for video compression. They include, these are the five standards: MPG 1, 2, 4, 7, MPG 21. This is all names, description given about all these. And the other video compressions are also there: DVH.261, H.263, DivX. So these are the video compression standards. ऑडियो वीडियो स्ट्रीमिंग में, एज वी ऑलरेडी डिस्कस प्रीवियसली, कि स्ट्रीमिंग में लाइव वेबकास्ट होता है, ऑन डिमांड वेबकास्ट भी होता है. लाइव वेबकास्ट द ट्रांसमिशन ऑफ लाइव और प्री रिकॉर्डेड ऑडियो और वीडियो टू पर्सनल कंप्यूटर्स that are connected to the internet. A user who clicks a link to a live clip joins the live event in प्रोग्रेस. अभी जैसे हमारा ये मीटिंग है, ये लाइव चल रहा है, तो उस लिंक में, गूगल मीट पे हमने उस लिंक पे क्लिक किया और वी कैन ज्वाइन द लाइव मीटिंग, राइट? बिकॉज द इवेंट इज हैपनिंग इन रियल टाइम. ये रियल टाइम में हो रहा है. फास्ट फॉरवर्ड, रिवाइंड एंड पॉज केपेबिलिटीज आर नॉट अवेलेबल. अगर आप उस लिंक में या हमारे ये मीटिंग के लिंक में आप जाओगे, तो उसमें हम ये सब जो नॉर्मली हम करते हैं अपने कोई भी एप्लीकेशन पे, नेटफ्लिक्स पे आप कोई मूवी देख रहे हैं या प्राइम वीडियो पे कुछ देख रहे हैं, तो वो सब ऑलरेडी उसमें पड़ा रहता है. और तो हम उसमें कर पाते हैं, फॉरवर्ड कर पाते हैं, रिवाइंड कर पाते हैं, या फिर से देख पाते हैं, या बार बार देख पाते हैं. बट लाइव स्ट्रीमिंग में क्या होता है, क्योंकि बिकॉज इट इज हैपनिंग इन रियल टाइम, तो ये जो ऑप्शंस होते हैं, फास्ट फॉरवर्ड, रिवाइंड, पॉज, ये सब ऑप्शंस आर नॉट अवेलेबल. Live webcasts are most suitable for high demand live presentations to large geographically dispersed audience. मतलब all over the world live streaming, बेसिकली उसका पर्पस ये होता है कि ऑल ओवर द ग्लोब वी कैन do the live streaming of any event. Participants can attend these virtual presentations from their desktop by visiting a website. Interaction between instructor and learners occur in real time. Participants can use a chat window to type in question, जैसे हम लोग करते हैं गूगल मीट में. We can type any query or any message in the chat box to the presenter during the session. On demand webcast. On demand webcast means pre recorded clips are delivered or streamed to user upon request. A user who clicks a link to an on demand clip watches the clip from the beginning. जैसे हम लोग डिफरेंट एप्स जो बताए अभी कि नेटफ्लिक्स है, प्राइम वीडियो है, या जो चैनल्स हैं, उसमें हम क्या कभी भी कोई भी अपने इंटरेस्ट का मूवी हो, प्रोग्राम हो, कुछ भी देख सकते हैं. तो वो शुरू से देख सकते हैं. और उसमें दो फीचर्स, फास्ट फॉरवर्ड है, रिवाइंड, पॉज, ये सब अवेलेबल होता है. तो ये इसलिए क्या इसका नाम है ऑन डिमांड वेबकास्ट, क्योंकि वो अवेलेबल तो उस प्लेटफॉर्म पे है, बट वो हमारे लिए, हमारे टाइम की रिक्वायरमेंट पे उसका वेबकास्ट हो रहा है, इसलिए वो ऑन डिमांड वेबकास्ट कहलाता है. फाइल फॉर्मेट्स एंड कंटेंट क्रिएशन. फाइल फॉर्मेट्स जैसे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल हमारे सिस्टम में भी होती हैं, और आपने नोटिस किया होगा कि अगर हम डॉक फाइल यूज करते हैं तो .doc होता है, एक्सेल फाइल यूज करें, एक्सएमएल फाइल यूज करें, पीडीएफ फाइल यूज करें, वर्ड फाइल, वर्ड और डॉक फाइल, तो उसमें उसके एक्सटेंशन होते हैं ना, डॉट, डॉट पीडीएफ,
.doc, हाँ, या इमेज फाइल होती है। तो ये वही इसलिए यहाँ पे बताने की आपको कोशिश की गई है ये स्लाइड से। फाइल फॉर्मेट्स एंड कंटेंट के द मोस्ट कॉमन फॉर्मेट्स फॉर टेक्स्ट, ये टेक्स्ट वाले टेक्स्ट आर्काइविंग आर नेटिव फॉर्मेट्स, मोस्टली एमएस वर्ड के पीडीएफ, पीडीएफ ए, एक्सटेंशन वर्जन टेक्स्ट, लेटेक्स एंड एक्सएमएल एप्लीकेशंस। Other formats that are also prevalent are HTML file, SGML, XHTML. है ना? Documents formats may be broadly grouped into three categories. अब documents कितने forms के हो सकते हैं? पहले भी we have already discussed. टेक्स्ट बेस्ड फॉर्मेट्स हो सकते हैं, इमेज फॉर्मेट्स हो सकते हैं, ये ऑडियो एंड वीडियो फॉर्मेट्स हो सकते हैं. नाउ वी विल कम टू डी स्पेस. डी स्पेस जैसे कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एक दो पास्ट इन 2-3 क्लासेस दैट ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स आर अवेलेबल ऑन द इंटरनेट. कल हम लोगों ने इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर्स के बारे में बात करी थी. कौन से सॉफ्टवेयर के बारे में बात करी थी कल? कल हम लोगों ने कौन से सॉफ्टवेयर की बात करी थी? Can anyone tell? Let me check who are active in this meeting. ओपन और सोर्स कमर्शियल ये सब सॉफ्टवेयर था मैम. हम्म ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कमर्शियल सॉफ्टवेयर ये ओपन सब. सोर्स सॉफ्टवेयर था. कौन से सॉफ्टवेयर बेसिकली हमने कल किसके बारे में बात करी थी? पोहा. कोहा, हाँ, राइट, वेरी गुड. ऐसे पूछ रही थी मैम. हाँ मतलब नाम पूछ रही थी, हमको लगा हाँ, कलेक्टिव. वही हम नाम पूछ रहे थे क्योंकि सारे तो डिस्कस करना पॉसिबल नहीं होता है ना. और ये सब दिस इज ओनली प्रैक्टिकल थिंग. तो लेकिन अब आज हम डी स्पेस की बात करेंगे तो आप कहेंगे कि कल तो हमने कोहा के बारे में बात करी थी, आज हम डी स्पेस के बारे में बात कर रहे हैं. तो कोहा एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कोहा एंड डी स्पेस? वो भी ओपन सोर्स है मैम और ये भी ओपन सोर्स है. तो व्हाट इज द डिफरेंस? कल जो हमने कोहा के बारे में बात करी विच इज अ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बट दैट इज बेसिकली लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, राइट? वो इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सिस्टम के लिए बना है कोआ. इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सिस्टम मतलब जिसमें सारी वर्किंग, जो बेसिक वर्किंग ऑफ लाइब्रेरी है दैट वी कैन automate, right? To build our library as an automated library from traditional library. ठीक है, तो उसमें कोहा में क्या करते हैं हम? जो हमारे बेसिक फंक्शंस हैं लाइब्रेरी के, एक्विजिशन हो गया, एक्विजिशन है, सीरियल मैनेजमेंट है, और बिल प्रोसेसिंग है, सर्कुलेशन है. सर्कुलेशन मतलब इशू रिटर्न. तो ये जो फंक्शंस ऑफ लाइब्रेरी हैं, अगर हम बोले कि फंक्शंस ऑफ लाइब्रेरी जो है उनको हम ऑटोमेट करते हैं थ्रू एक वन. एक्सक्यूज मी मैम, सम पीपल आर अनएबल टू कनेक्ट ड्यू टू इंटरनेट प्रॉब्लम इन हरियाणा. व्हाट शुड दे डू? अब इसमें आई कैन नॉट हेल्प if some internet problem is there. I can only say that um, let me just reply to these people, okay? uh, ओके. सो हाँ, तो कल जो हमने डिस्कस किया कोहा के बारे में, तो कोहा इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सिस्टम का सॉफ्टवेयर है जिसमें बेसिक फंक्शंस ऑफ लाइब्रेरी आर ऑटोमेटेड विद द हेल्प ऑफ कोहा and which is a open source software. ठीक है. Now today we will focus on D space.
तो डी स्पेस इज ऑल्सो अ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, बट डिफरेंस यही है कि इसमें हम डिजिटल लाइब्रेरी डेवलप कर सकते हैं। समझ में आ रही है बात, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? थ्रू डी स्पेस वी कैन डेवलप आवर लाइब्रेरी एज डिजिटल लाइब्रेरी। हम कोहा यूज करके वी कैन ऑटोमेट अवर लाइब्रेरी। ऑटोमेट मीन्स अवर फंक्शंस विल बी ऑटोमेटेड, अवर बेसिक फंक्शंस विल बी ऑटोमेटेड। लेकिन डी स्पेस का यूज करके हम अपनी लाइब्रेरी को डिजिटाइज कर सकते हैं, ठीक है? देन अवर लाइब्रेरी विल बी कॉल्ड एज डिजिटल लाइब्रेरी। And DSpace is also an open source software. It captures and describes digital material using a submission workflow module or a variety of programmatic ingest options. It distributes an organization's digital assets over the web through a search and retrieval system. It preserves digital assets over the long term. The DSpace project was initiated in July 2000 as part of the HP-MIT Alliance. The project was given $1.8 million. This is just a short history USD by HP over 2 years to build a digital archive for MIT. That ये MIT है, मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट है ना, आपको पता होगा MIT यूनिवर्सिटी जो है, दैट would handle the 10,000 articles produced by MIT authors annually. तो ये इनिशियल प्रोजेक्ट था. DSpace has gone through several versions and the current stable release available is version 4.2. The DSpace Foundation was formed in 2.7 as a non-profit organization to provide support to the growing community of institutions that use DSpace. Most of the times क्या है कि whenever you might have visited certain websites of good institutes or institutes of reputations like IITs and IIMs, यू माइट हैव नोटिस कि उनका वेबसाइट पे, लाइब्रेरी वेबसाइट पे तो आप जाते हैं, फिर उसके बाद आप व्हेन यू विजिट टू देयर वेबसाइट इन डिटेल, व्हेन यू एंटर दैट लाइब्रेरी वेबसाइट, यू माइट हैव नोटिस दैट रिपोजिटरीज आर आल्सो मेंटेन्ड. तो ये दीज रिपोजिटरीज जहाँ पे उनके आर्टिकल्स, देयर रिसर्च आउटपुट and there various events also, some IITs, they are also maintaining the events, photographs, videos, so they are using DSpace only. What are the functional features of DSpace? Full text search. फुल टेक्स्ट, जैसा कि नाम से है, फुल टेक्स्ट सर्च इज द मेन फंक्शनल फीचर मीन्स कि आप पूरा आर्टिकल, फुल टेक्स्ट का मतलब पूरा आर्टिकल, आर्टिकल होता है, आर्टिकल के पार्ट्स होते हैं, सबको पता रहता है, आप लोगों को भी पता ही होगा कि एब्स्ट्रैक्ट पार्ट होता है, तो कहीं कहीं पे क्या है, सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट आपको दिखता है, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट के साथ में अगर लिंक भी आप अपलोड कर दोगे तो उस लिंक पे क्लिक करने के बाद यू कैन download the full text of that particular document. Users may search for specific keywords that only appear in the actual content and not in the provided description. Navigation. Users in DSpace find their way to relevant content through searching for one or more keywords in metadata or extracted full text, faceted browsing through any field provided in the item description, through external reference such as a handle, browse in another important mechanism for discovery in DSpace whereby the user views in particular index. Then another feature is supported file types. DSpace actually supports most of the files. While DSpace is most known for hosting text-based materials, including scholarly communication and
electronic thesis and dissertations, it can accommodate any type of uploaded file. File uploaded on these space are referred to as bit streams. As after ingestion, files in DSpace are stored on the file system as a stream of bits without the file extension. फाइल एक्सटेंशन जो हमको दिखता है .doc .pdf, ये इस तरह का एक्सटेंशन उसमें डी स्पेस जब के अंदर जब स्टोर हो जाता है, तो दिस इज ऑल बिहाइंड द स्क्रीन terms which technology which is mentioned here, which we are not seeing, but they are telling that it is not, it is stored in the type of streams of bits without the file extension, optimized for Google indexing. For the Google Scholar indexing, DSpace has added specific metadata in the page head tags that facilitates indexing in Scholar. OpenURL support, DSpace supports the OpenURL protocol through linking server software called SFX server. DSpace will display on OpenURL link on every item page. एक मिनट इसको हम इस पे कर लेते हैं. मेटाडेटा, मेटाडेटा बीच में एक क्लास में मैंने बताया मेटाडेटा क्या है. डेटा अबाउट डेटा मीन्स डिस्क्रिप्शन अबाउट अ डेटा, दैट इज कॉल्ड मेटाडेटा. तो मेटाडेटा मैनेजमेंट किस तरह से होता है? थ्री टाइप्स इसमें यूज होते हैं मेटाडेटा: डिस्क्रिप्टिव मेटाडेटा, administrative metadata, and structural metadata. Descriptive metadata, a qualified Dublin core metadata scheme loosely based on the library application profile set of elements and qualifiers, is provided by default. However, one can configure multiple schemes and select metadata fields from a mix of configured schemes to describe items. एडमिनिस्ट्रेटिव मेटाडेटा, ये जैसा कि नाम है कि भाई डिस्क्रिप्टिव मेटाडेटा मीन्स कि कोई जो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट होगा तो उसके बारे में डिटेल हम देते हैं, क्या उसका ऑथर है, पब्लिशर है, कि नंबर ऑफ पेजेस, मतलब वो जो इंफॉर्मेशन हम एक कैटलॉग में बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन में यूज करते हैं, वो डिस्क्रिप्टिव मेटाडेटा होता है. एडमिनिस्ट्रेटिव मेटाडेटा वो है जो कि एक ऑथराइज पर्सन ही उसको यूज कर सकता है. Structural metadata, this includes the information about how to present an item. जो भी आइटम हमको डिस्प्ले कराना है अपनी स्क्रीन पे या अपने यूजर को बताना है, तो उसका स्ट्रक्चर किस तरह का होगा वो डिसाइड होता है स्ट्रक्चरल मेटाडेटा के थ्रू. Then the another feature is function is choice management and authority control. This is a configurable framework that lets you define plugin classes to control the choice of values for a given DSpace metadata fields. It also lets you configure fields to include authority values along with the textual metadata value. The choice control system includes a user interface in both the configurable submissions UI and the admin UI that assists the user in choosing the metadata value. Then licensing. DSpace offers, जब ये तो आपको पता है कि कोई भी जो सॉफ्टवेयर होता है वो हर सॉफ्टवेयर भी टू go through the license. DSpace also offers support for license on different levels: collection and community licenses, license granted by the submitter to the repository, Creative Commons support for DSpace items, persistent URLs and identifiers. Researchers require a stable point of reference for their works. So, to help solve this problem, a core DSpace feature is the creation of a persistent identifier for every item.
collection and community stored in D space. To persist identifiers, D space requires a storage and location independent mechanism for creating and maintaining identifiers. DSpace uses the CNRI handle system for creating these identifiers. This is the figure giving you the feel of how the content is ingested into the DSpace. Rather than being a single subsystem, ingesting is a process that spans several. Below is a simple illustration of the current ingesting process in DSpace. The batch item importer is an application which turns an external SIP. So this is basically the workflow here. They are trying to describe it how the workflow goes on inside the behind the screen, and for that what is being done inside the this software. I'm not reading out all these things. This is the workflow steps sequence. पहले the क्या होता है, the first the collection receives a submission if the collection has a group assigned for, because this is actually the practical thing. uh, in the last slide I have given the these links in reference form. So here you can uh, in the last slide. Yeah, here are the references. Here you get the links. These are actually the tutorials where you can go through. The language is very simple. This is also very user friendly for DSpace also, as well as for Greenstone, the other software which we are going to discuss. So basically, these software related things are actually practical things. When you will try it yourself, this is the link for DSpace installation guide. So if you want, you can install DSpace on your system also. और unless and until you do the practical thing, ये चीज़ें उतना पढ़ने में मतलब neither you get the interest और कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें you cannot store in your memory. So once you will go through all these process, although मैंने भी install किया है DSpace in our library, but स्टिल जो स्टेप वाइज स्टेप, क्योंकि वो अपने आप चलता जाता है और यूजर को खाली क्लिक 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 करना होता है जब ये प्रोसेस स्टार्ट होता है, तो बिहाइंड दैट प्रोसेस क्या चल रहा है उससे हम एज अ यूजर हमें उतना वी आर नॉट बॉदर्ड, राइट? तो ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं और इसमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, किस स्टेप पे क्या होता है, कितने स्टेप्स हैं, जैसे वर्क फ्लो जो स्टेप वो पॉसिबल एक्शंस हैं कि कैन एक्सेप्ट सबमिशन फॉर इंक्लूजन और रिजेक्ट सबमिशन। जब हम सबमिट करते हैं मीन्स जब हम सबमिट करते हैं डी स्पेस में अपना आफ्टर इंस्टॉलेशन, ये समझा है बताने की कोशिश ये कि when we have already installed DSpace and we are performing the job on that, then if we are trying to submit something, so only two options are there: either it will be accepted or it will be rejected. So if it is accepted, then it's well and good. If it is rejected, the only reason might be that there might be some error in the metadata in the metadata description which we have given. That is why we are that item is being rejected. So the solution is that we can edit the metadata provided by the user with the submission, but cannot change the submitted files. Must then commit to archive, may not reject submission. And the other functions, command line import facilities are there. Means ki dspace also include batch tools to import items
in a simple directory structure where the Dublin core metadata is stored in an XML file. This may be used as a basis for moving content between DSpace and other systems. मतलब दूसरे बाहर के फाइल्स भी हम लिंक के थ्रू इंपोर्ट कर सकते हैं डी स्पेस में. Registration for externally hosted files. Registration is an alternate means of incorporating items, their metadata, and their bit streams into DSpace by taking advantage of the bit stream already being in accessible computer storage. Suppose अगर Library of Congress की वेबसाइट पे कोई फ्रीली अवेलेबल बुक्स है जो हम चाहते हैं कि हमारे डी स्पेस लाइब्रेरी में वो शो हो, तो उनके लिंक हम कॉपी कर सकते हैं और हम अपने डी स्पेस लाइब्रेरी में उसको शो कर सकते हैं. Getting content out of DSpace. OIS support. Open Archives Initiatives has developed a protocol for metadata harvesting. वो जो बोल रहे हैं हम कि दूसरी वेबसाइट से उसको क्या metadata harvesting बोलते हैं. This allows sites to programmatically retrieve or harvest the metadata from several sources and offer services using that metadata such as indexing or linking services. Such a service could allow users to access information from a large number of sites from one place. SWORD support. SWORD, what is the full form of SWORD? Simple Web Service Offering Repository Deposit is a protocol. Protocol means a standard that allows the remote deposit of items into repository. Command line export. This facilitates DSpace, includes batch tools to export items in a simple directory structure where the Dublin core metadata is stored in an XML file. Packager plugins. The packages are software modules that translate between DSpace item objects and a self-contained external representation or package. A package ingester interprets or ingests the package and create an item. A package disseminator writes out the contents of an item in the package format. Crosswalks plugins. These are the software modules that translate between these space object metadata and a specific external representation. And ingestion crosswalk interprets the external format and crosswalks it to DSpace's internal data structure, while a dissemination crosswalk does the opposite. The packager plugins and OAH PMH server make use of crosswalks plugins. Then the supervision and collaboration. In order to facilitate as a primary objective the opportunity for thesis authors to be supervised in the preparation of their e-thesis, a supervision order system exists to bind groups of other users to an item in someone's pre-submission workspace. The bound group can have system policies associated with it that allow different level of interaction with the student's item. A small set of default policy groups are provided: full editorial control, view item contents, and no policies. Then user management in DSpace is very user friendly. To create different e-users, e-people and groups are the way DSpace identifies application users for the purpose of granting privileges. Both e-people and groups are granted privileges by the authorization system described below. अथराइजेशन सिस्टम जैसे कि कल हमने एलडेप कल भी हमने डिस्कस किया था कि जब नेटवर्क हमें फैसिलिटी वाईफाई फैसिलिटी अपने इंस्टीट्यूशन में यूज करनी होती है तो एक एलडेप पासवर्ड हमको देना होता है. तो क्योंकि वो एक ऑथेंटिकेशन है कि दिस इज द ऑथराइज्ड पर्सन हु कैन avail the facility provided by the institute through the
server. So in user account, they should have email address, first and last names, whether the user is able to log into the system via web UI, user interface. UI matlab user interface. A password, a list of collections for which the e-person wish to be notified of new item, whether the e-person self-registered with the system, that is whether the system created the e-person record automatically as a result of the end user independently registering with the system, as opposed to the e-person record being generated from the institution's personal database. For example, the network ID for the corresponding LDAP record if LDAP authentication is used for this e-person. Then the subscriptions, as noted above, end users may subscribe to collections in order to be altered when new items appear in those collections. Groups of are another kind of entity that can be granted permissions in the authorization system. A group is usually an explicit list of e-people. Anyone identified as one of those e-people also gains the privileges granted to the group. Administrators can also use groups as roles to manage the granting of privileges more efficiently. What about the access control? Access control is through authentication, authorization. Authentication is when an application system positively identifies itself as belonging to an e-person and or group. Authorization, D spaces authorization system is based on associating actions with objects and the list of e-people who can perform them. The associations are called resource policies and the list of e-people are called groups. There are two built-in groups, administrators who can do anything in a site and anonymous, which is a list that contains all users. असाइनिंग मतलब एक हम एडमिनिस्ट्रेटर एक होता है और बाकी हमारे यूजर्स होते हैं. Assigning a policy for an action on an object to anonymous means giving everyone permission to do that action. The following actions are possible: the usage matrix usage matrix when D space is equipped with SOLR based infrastructure to log and display page views and file downloads, item collection, and community usage statistics. Usage statistics can be retrieved from individual item collection and community pages. System statistics, various statistical reports about the content and use of your system can be automatically generated by the system. Then digital preservation checksum checker. This the purpose of the this checker is to verify that the content in a DSpace repository has not become corrupted or been tampered. Then, what is the design of the system? Whenever you, I'll just show you. Although the repositories, as I said, ki most of the repositories are using DSpace only. Suppose I'm just visiting IIT Indore. Hmm, okay, IIT Indore website is not coming. IIT Delhi library. Okay, so this is the website page, home page of IIT Delhi. Hmm. अब यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं, ये आपका रहता है अवर टीम वेब पैक, ये सब रहता है. ठीक है, हम आपको क्या दिखाना चाहते हैं, जो इसका ये ही है शायद आया अभी. हाँ, इसका होम पेज, ये इसकी सर्विसेज है. होम पेज बहुत ज़्यादा स्क्रोलिंग मांग रहा है यहाँ पे.
Actually, I want to, this is the institutional repository. When we'll click this repository, let's see, most of the repositories are built using this DSpace. It is taking long time to. Mhm. File is not coming. Maybe, and this may be the reason कि most of the time what happens कि maybe that repository is not available on internet. It is available through intranet. Internet and intranet difference, I hope you all understand. So that is why that is not coming. So basically, the system design is as such. D space is divided into communities. हमको जब डी स्पेस हम इंस्टॉल कर लेते हैं तो हमें कम्युनिटी बनानी होती है। कम्युनिटी मतलब कि हमें अपना जो कलेक्शन है वो कौन से मेन मेन ग्रुप्स जो जिसको हम कहेंगे वो क्या उसका नाम होगा, तो वो कम्युनिटी कहलाता है। कम्युनिटी मतलब कि जैसे सपोज हमने ये सोचा कि एक कम्युनिटी हमने बनाई कि आर्टिकल्स। आर्टिकल्स मतलब उस कम्युनिटी में उसका हमने नाम आर्टिकल क्यों दिया, क्योंकि हम चाहते हैं कि उसमें हमारे, या सबसे पहले हम क्या कहेंगे, अपना जो इंस्टीट्यूशन का स्ट्रक्चर है उसको हम देखेंगे। हमारा इंस्टीट्यूशन इज हैविंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, तो पहले हमारे लिए क्या सही रहेगा कि हम या तो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बना लें। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बनाएंगे, फिर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर फैकल्टी होंगे और वो फैकल्टी के अपने आर्टिकल्स होंगे जो उनका रिसर्च आउटपुट होगा। तो एक ये हायरार्की बनी। तो इसीलिए जिसमें सबसे पहले हम कम्युनिटी बनाते हैं विच कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू सब कम्युनिटी। एक मेन कम्युनिटी हमने बनाई, डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट के अंदर सब कम्युनिटी बनाई, फैकल्टी। तो इस तरह से होता है। फिर कम्युनिटीज के अंदर कलेक्शन हम डालते हैं विच आर ग्रुपिंग। वो यही दिखाने के लिए आई जस्ट वांटेड कि एक आपको किसी भी इसका खुल जाता अगर रिपॉजिटरी। मैम आईआईटी इंदौर का खुल रहा है, आईआईटी इंदौर का। खुल गया? यस मैम, मेरे तो इसमें खुल रहा है, गुड। हाँ, तो उसमें रिपॉजिटरी आपको दिख रहा होगा, है ना? हाँ, ये अभी आया। हाँ मेंबर भी। हाँ, तो ये देखिए, आप इसको में जाएंगे, रिपॉजिटरी में लोड हो रहा है अभी। तो रिपॉजिटरी आपने क्लिक किया, रिपॉजिटरी पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि यही आपको टर्म्स मिलेंगे। कम्युनिटी क्या है ना? कम्युनिटी, फिर उसके अंदर कलेक्शन, ऐसे करके आता है। खुल तो रहा है, ब्राउजिंग चल रहा है। रिपॉजिटरी आपके पेज पे खुला? हम्म, क्या है ये, ऐसे देखने से ज्यादा क्लियर होता आपको बजाय। नहीं खुला मैम, शायद वो बंद होगा सर। नहीं, बंद तो नहीं हुआ एक्चुअली। क्या होता है, हाँ, यही मेन कारण यही हो सकता है कि इंटरनेट। लेकिन मेन होम पेज तो खुलता है, ऐसा नहीं है कि खुलता नहीं है। आईटी टेलीकॉम तो ये होगा तो एक्चुअली शायद। कभी भी, हाँ, आप ड्यूरिंग द डे टाइम कभी आप देखिएगा कि रिपॉजिटरीज आप देखेंगे तो आपको डी स्पेस लिखा हुआ दिखाई पड़ेगा पहली बात तो उससे आपको पता चलता है कि दिस रिपॉजिटरी इज मेंटेन्ड ऑन डी स्पेस, डेवलप की गई है डी स्पेस यूज करके। और फिर ये जो टर्म्स हम यूज कर रहे हैं, कम्युनिटी, कलेक्शन, आइटम्स, है ना, ये सारे टर्म्स आपको उस पे दिखते हैं।
ब्राउजिंग तो कर रहा है। चलिए, अच्छा ठीक है, इसको आप लोग अपने एंड पे ज़रा देखने की कोशिश करिएगा वेबसाइट, है ना? तो उससे आपको देख के फिर समझ में आएगा कि कलेक्शन को किस तरह से मैनेज कर रहे हैं। तो ये कम्युनिटीज कलेक्शन फिर उस पे आपको दिखेंगे। और आप अगर टाइम निकाल पाए तो आप लोग कोशिश करिएगा अपने एंड पे इंस्टॉल करने की, डी स्पेस इंस्टॉल करके देखिएगा कि क्या कर पाते हैं आप। फिर ये इसका और फीचर है स्टोरेज रिसोर्स ब्रोकर। Means कि this actually this software, this support DSpace offers two means for storing bit streams. The first is in the file system on the server, the second is using SRB, storage resource broker. Both are achieved using a simple lightweight API. SRB is purely an option but may be used in lieu of the server's file system or in addition to the file system. तो फिर ये प्रोसेस आता है आपका कैसे इंस्टॉल करेंगे। ये प्रोसेस लिखा तो हुआ है और दिस इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन इंटरनेट। आप वो जो लिंक मैंने दिया है उस लिंक को आप क्लिक करेंगे तो यू विल गेट ऑल द इंस्ट्रक्शंस कि हाउ टू इंस्टॉल। तो इसको रीड आउट करने से कोई इतना फायदा नहीं है, देयर इज नो बेनिफिट कि हम इसको पढ़ें। ये आपके मटेरियल में भी ऑलरेडी आपके पास होगा और जो लिंक है उस पे भी आप चेक करेंगे तो क्या क्या हमारी रिक्वायरमेंट रहती हैं और क्या हमको चाहिए होता है, जावा, पोस्टजर, अपाचे, टॉम कैट, है ना? ये सब टेक्निकल टर्म्स आपको मिलेंगे और वो वहाँ पे भी मिलेंगे और ये इनको कोई याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको। जब भी आपको इंस्टॉल करना होगा तो ये चीज़ें इजीली यू विल गेट ऑन द इंटरनेट। सिंपल वे में आप टाइप भी कर दोगे गूगल में कि हाउ टू इंस्टॉल डी स्पेस, है ना? तो आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। दिस इज द लिंक फॉर डी स्पेस इंस्टॉलेशन, द होल गाइड इज देयर। This is how working with these space goes on, creating communities, creating collection, फिर उसका metadata, descriptive metadata for the collection, हाँ? Then user और group बनाना, how we make user, कौन कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, मेटाडेटा डी स्पेस में किस तरह से करते हैं, आइटम सबमिशन वर्क फ्लो कैसे जाता है। फिर ये एक और सॉफ्टवेयर के बारे में भी आपको पता होना चाहिए जिसका नाम है ग्रीन स्टोन, है ना? तो दिस ग्रीन स्टोन, दिस इज ऑल्सो एन ओपन सोर्स multilingual software and issued under the terms of the GNU General Public License for building and distributing digital library collection. Aim of Greenstone software is to empower users particularly। तो बेसिकली देखिए दो सॉफ्टवेयर आपको आपके कोर्स में है। एक ये मतलब डिजिटल लाइब्रेरी के कंसर्न में वन इज डी स्पेस एंड अनदर इज ग्रीन स्टोन। तो दोनों के जो फीचर्स और फंक्शंस और एडवांटेजेस, बस बेसिकली ये चीज़ों पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। इंस्टॉलेशन प्रोसेस तो नेट पे अवेलेबल होता है, आपको यू डोंट हैव टू मग अप कि यू नीड नॉट टू रिमेम्बर, कोई स्टेप्स आपको याद नहीं करने होते हैं। बस जो मेन मेन फीचर्स हैं हर सॉफ्टवेयर के, जो भी सॉफ्टवेयर आपके कोर्स में है
उनके मेन फीचर्स आप पढ़ लो और उनको माइंड में रख लो, या कुछ स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं जो एक सॉफ्टवेयर को दूसरे सॉफ्टवेयर से यूनिक बनाते हैं, दैट ऑल्सो यू कैन रिमेम्बर। तो बेसिकली अब जैसे एडवांटेजेस ऑफ ग्रीन स्टोन, इट इज बेस्ड ऑन FOSS platform and has active community supporting it. It is multi-platform application and can run on various operating system platforms including Windows, Linux, Sun Solaris and Mac OS। जैसे डी स्पेस है वो विंडोज और लिनक्स पे रन करता है, ये कई ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर पे चल सकता है। It is available in both binary and source code form for the Windows. Green Store collection can be served on World Wide Web and it can be exported to a CD-ROM and accessed from the CD-ROM। मतलब एक आप CD पे भी ले सकते हैं, अगर आपका कोई ऐसा फ्रेंड है जो who is very techno savvy and who is having interest of related to latest technologies, you can take his help कि भाई हमको सीडी पे ग्रीन स्टोन इंस्टॉल करके दे दो, तो वो सीडी फिर that can be accessed। तो it uses Perl scripting, है ना, MGPP और Lucene for indexing, Apache XML, which are proven technologies। तो Unicode compliant, facilitating building, searching, browsing documents। So these are the advantages. Multi metadata with editor, practical GLI interface for editing, plugins, टेक्निकल फीचर्स हैं, मल्टी प्लेटफॉर्म, यूजर फ्रेंडली applications, interoperability, interfaces, मतलब what is the ambience of the interface, how it is being done in this particular software। All the metadata are stored in XML format with the documents. Metadata can also be extracted from XML statements within the documents. It can be assigned easily through the GSDL librarian interface। इसमें दो इंटरफेस होते हैं, एक लाइब्रेरियन इंटरफेस यूजिंग ग्रीन स्टोर मेटाडेटा सेट एडिटर और दूसरा यूजर इंटरफेस। Document formats, so mostly all type of file formats are supported। Plugins are also used to ingest document for text documents, plugins for PDF, PostScript, Word, RTF, HTML, even all type of formats are supported। Languages, हाँ अब देखो यूनिक यहाँ पे इसका स्ट्रेंथ क्या बता रहा है, वन ऑफ ग्रीन स्टोन्स यूनिक स्ट्रेंथ इज इट्स मल्टीलिंगुअल नेचर। मतलब रीडर्स इंटरफेस इज अवेलेबल इन द फॉलोइंग, मतलब ऑलमोस्ट ऑल द लैंग्वेजेस आर, these many languages are available in Greenstone for user interface। The librarian interface and the full Greenstone documentation is in English, French, Spanish and Russian। तो ये एक थोड़ा यूनिक इसका क्वालिटी बनता है इन कंसर्न विद द लैंग्वेज विच कैन बी आस्क्ड। इंस्टॉलेशन प्रोसेस ये है, क्या रिक्वायरमेंट होती है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट क्या है, दिस इज द लिस्ट। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट क्या है, किस तरह से, देयर आर डिफरेंट ऑप्शंस फॉर गेटिंग GSDL। हम कैसे ले सकते हैं, यूनेस्को CD-ROM और IIT डिजिटल लाइब्रेरीज इन एजुकेशन CD-ROM और ग्रीनस्टोन वर्कशॉप CD-ROM। डाउनलोड डायरेक्टली फ्रॉम दिस वेबसाइट greenstone.org। And if Greenstone is already installed on your system, then completely remove the old version before installing a new one। ये ग्रीन स्टोन के इंटरफेसेस कौन से होते हैं, दो इंटरफेस होते हैं। देर आर टू इंटरफेसेस, लाइब्रेरियन इंटरफेस, वेबसाइट which serves as the user interface। Librarian interface in GSDL is for creation, management and updating collection। मतलब librarian ही update करेगा उसका collection, तो that interface is called librarian collection interface। It is programmed in Java, highly based on creation of the necessary
commands. Website is served by internal www server or Apache. Web pages are created by Perl and Java servlets, which is customizable via CSS and text files. लाइब्रेरियन इंटरफेस के ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. मेन फंक्शंस हैं कि उसका क्या काम है. गैदरिंग, एनरिचिंग, डिज़ाइन एंड वेरियस प्लगइन्स. ग्रीन स्टोन यूज़र इंटरफेस जो रहता है उसके फंक्शंस हैं. कलेक्शन सर्चिंग, यूज़र क्या करेगा, यूज़र का काम है सर्च करना, तो कलेक्शन सर्चिंग, डॉक्यूमेंट ब्राउजिंग, these are the functions on available on user interface. Presentation of search results, ये यूज़र की स्क्रीन पे दिखता है. कलेक्शन बिल्डिंग, अब कलेक्शन बिल्डिंग जैसे डी स्पेस में देखा गया कि कैसे बिल्ड करते हैं, उसी तरह से here are the list of how you will build collection in green store. So and as I said previously also कि this is the practical thing. इसको थ्योरी में पढ़ना इट्स नॉट वेरी इजी unless and until you do the practicals. So please kindly visit the on the main websites of these softwares, then you will get a little bit idea. And if you have time, you can also try to install it, and hands-on experience will enhance your knowledge in concerning these softwares. Okay. So, and I hope you all have given your attendance. Let me check. How many people are there? 23 are there. Have you all given your attendance? 23 are there. What was the maximum number in the during the class? Hmm? 28? 28. 28. Okay. Yes, ma'am. And hope everybody has given, including Nidhi and Arvind, who were the co-host, है ना? आप लोग ने भी अपनी अटेंडेंस दी है ना? Yes, ma'am. Yes, दे दी ma'am. है attendance. Okay, okay. ठीक है, I've already stopped sharing the slide, and now it's time to say good night. Today is Sunday, tomorrow is Monday. मैम ये लास्ट लेक्चर था क्या? हेलो Hello. मैम ये लास्ट लेक्चर था क्या? Huh? लास्ट लेक्चर था क्या? I'm not getting what मैम you're saying. टीवी ये का लास्ट साउंड कम लेक्चर था क्या करेंगे. मैम? लास्ट लेक्चर था क्या मैम? हाँ, एज पर द शेड्यूल ये लास्ट था. बीच में एक जो अपना क्लास नहीं हो पाया था. I'll just confirm if it is possible to take that class. Okay. और मैम ये 224 और 229 का वाइवा भी होगा क्या अभी इसके बाद? अभी अभी मतलब मतलब अभी नहीं, मतलब ये लेक्चर्स हो गए ना, तो अभी इसका वाइवा फिर हाँ, एग्जाम. वो देखिए कब वाइवा होगा, कब प्रैक्टिकल होगा, ऑल दीज थिंग्स. यू ऑल प्लीज contact your regional center लेकिन मैम आप ही counseling लेंगे ना? centers. हाँ, आप ही लेंगे ना एग्जाम? देखिए वो हम नहीं कह सकते कि कौन लेगा एग्जाम. उससे आपको क्या फर्क पड़ता है कौन लेगा एग्जाम कौन नहीं लेगा? दैट डजंट मेक सेंस, राइट? आपको तो अपनी तैयारी करनी है. कोई भी ले एग्जाम, कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है. तो now good night all of you, and let's see whether we can do that one missed class, and if not, then best of luck for your exams. Good night all of you. Bye.